इंफॉर्मेशन की बात है सब सेक्शन 5 ऑफ आर्टिकल 209 वो इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया है, तो यहाँ तो कॉग्निजेंस लिया है इसने, वहाँ पे इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक पर्सन ने किसी ने कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है। तो इंक्वायरी उस सूरत में करी जाए जब कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ने खुद लिया, रजिस्ट्रार ने दूसरा लेटर भेजा है, बिल्कुल उसकी बेसिस पे तो ये चीज जो है यहाँ पे जरूरी है, इंक्वायरी बहुत जरूरी, जब कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट खुद ले रहा है और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। जनाब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हुआ ये था कि ना 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये केसेस में कुछ एक आध मेरे हिसाब से कुछ करप्शन का भी केस है इसका। जी but I'm just saying the precedent available with us. गुजारिश ये है कि इसमें हिस्ट्रीज की ये है कि ना 56 कॉन्स्टिट्यूशन में विदाउट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किसी जज को रिमूव किया जा सकता था, ना 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हो सकता था, 73 कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं हो सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम 17th अमेंडमेंट में ये लाए गए थे, द काउंसिल ऑन इट्स ओन, द काउंसिल में ऑन इट्स ओन मोशन, ये पहली दफा 2005 में इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि इवन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल विल हैव द पावर ऑन इट्स ओन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट अवेलेबल कैन प्रोसीड अगेंस्ट द जज ऑफ द। दिस इज द केस हियर, इट इज नॉट अ केस ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इट इज अ केस विद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। कैसे शुरू हुआ ये इधर में दिखाइए, लेटर है जी रजिस्ट्रार सर, दोबारा ये बताएं कैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्या अपने तौर पे ये उठाया या वो किधर या रजिस्ट्रार ने एक नोट लिखा, रजिस्ट्रार ने किस कैपेसिटी में लिखा ये अपने तौर पे ना कंप्लेंट है, ये वो दिखाएं, रजिस्ट्रार ने किस कैपेसिटी में दी ये भी देखना है, दिखाएं क्या चीज है उसको। 39 पेज के ऊपर है ये, 39 पेज पे पैरा 3 2018 को रजिस्ट्रार ने ये पेज नंबर 39 ऑफ द पेपर बुक। जी सर ये है सर, यहाँ पर अपॉन perusal of the note put up by the secretary of the council। ये नोट किधर है, किस पेज पे? नोट नीचे है सर दिया वो पैरा 3 में है। आपके कॉपी लगाई आपने, एक्चुअल लगी हुई है? जी कॉपी लगाई, इन्होंने खुद भी जो जवाब दिया है रजिस्ट्रार ने, वो दिखा देना एक्चुअल नोट कहाँ है। जी सर ये 21/7/2018 ऑनरेबल मिस्टर जज सिद्दीकी एड्रेस। नहीं पेज कहाँ है, पेज कौन? ये पेज 39 पे सर। नहीं ये तो उसका रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन है, मुझ में एक्चुअल नोट दिखाइए मुझे। एक्चुअल नोट हमारे पास तो नहीं है, ये हमें तो ये रिपोर्ट से डॉक्यूमेंट फाइल किए, इसमें क्या है सारे ये जितने अब उन्होंने जो ये सर 73 पेज पे एक लेटर है अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब का जी, कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 31 जुलाई 2018 का है जी हाँ। I'm directed to serve upon you the enclosed। ये तो बाद में है ना, कंप्लेंट जो इन्होंने रिसीव की है वो 23/7 की है, जो रजिस्ट्रार ने कंप्लेंट वो मेंशन किया उसको रिप्रोड्यूस किया हुआ है, पेज नंबर 39 पे पैरा 3 में रिप्रोड्यूस किया हुआ है। जी हाँ बिल्कुल सही, एग्जैक्टली वो रिप्रोड्यूस किया। देन the note put up by the registrar and the transcript of the speech। नोट जो है ये नोट, हाँ ये नोट on top of page 39 on 21/7/2008 Honorable Mr. Justice Siddiqui addressed District Bar Association Rawalpindi। During this speech he said 39 के शुरू में सर, page 39 सर, ये पैरा 238 से शुरू हो रहा है, पेज 39 के ऊपर जो फर्स्ट पैरा आप देखिए। नहीं वो तो एलिगेशन है ना जी, एलिगेशन है। अच्छा नीचे पैराग्राफ 2 से पढ़िए सर, ये पैरा 2 on page 38 जी। On 23/7/2018 the secretary of this council, registrar Supreme Court of Pakistan, submitted the following note before the chairman of the council, chief justice of Pakistan। ये वो फिर नोट 23/7 को रखा गया। On 21/7/2018 Honorable Mr. Justice Siddiqui, no, he was acting pursuant to a direction of the Supreme Judicial Council, or my lord has asked, Justice Jamal has asked
that he did it himself. एक तो ना you do it. One is he does it, comes before the Supreme Judicial Council. So it doesn't say so much, but it appears that there was some kind of a... We will go by the Constitution. Constitution says the council on its own. On its own. Secretary is not the council. He may be complaining. It may be. He's part of the. But he's part of the Supreme Judicial Council. Maybe the council had directed him to do it. I don't know. Nothing is on record. कोई चीज नहीं है. लेकिन ये मतलब उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दिया. आप ये हियरिंग जो अच्छा एक चीज बताइए. आप जनाब पढ़ लीजिएगा. कितनी दफा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस लगा आपका? आप कितनी दफा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आपको तलब किया? एक दफा. Only on one occasion. What happened on that occasion? On that occasion, we said that please, in the first place... No, you asked something, why were you called? We were called to explain as a preliminary hearing before inquiry and preliminary hearing hoti under the 2000. Was the petitioner alone or was he assisted? I was with him. क्या हुआ सर? बताएं क्या हुआ था उस दिन? उसमें यही क्वेश्चन हुआ कि ये क्या स्पीच की है आपने? Okay, we made a speech which we. नहीं वो ठीक है बस. So it was a casual, formal meeting. वो charge frame हुआ आपके खिलाफ क्या हुआ? कोई charge frame नहीं है. कोई charge frame नहीं है. बल्कि इससे पहले. No, we may need to see the record of the Supreme Judicial Council. जरूर देख लीजिएगा. कोई कहाँ यहाँ भी कहीं रिपोर्ट में भी नहीं कहा गया कि कोई चार्ज फ्रेम हुआ है. रिपोर्ट में देख लीजिएगा ना, कहीं पर ये नहीं कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई चार्ज फ्रेम हुआ, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस दी गई जिसका मैंने जवाब देना था. नथिंग ऑफ दैट सर. आपको कोई शोकॉज नोटिस नहीं हुआ? शोकॉज नोटिस दिया. वो किधर है? वो शोकॉज नोटिस 74 पे. 74 ऑफ द पिटीशन. ये जनाब पेज 42 पर रिप्रोड्यूस भी हुआ है. पेज 74 पर इसका ये तो वेरेस अच्छा नाउ यू आर ये पेज 75 पे आ जाइए ना. ये है ना ये है जी पेज 75 पर. नाउ योर लॉर्डशिप आर हियर बाय कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्लेन योर कॉन्डक्ट विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग एलिगेशंस व्हिच प्राइमा फेसी कॉन्स्टिट्यूट मिसकॉन्डक्ट ऑन योर पार्ट विद इन द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ बी ऑफ क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. You were while addressing the District Bar Association Rawalpindi on 21/7/2018 have leveled the following serious allegations pertaining to superior judiciary and a state institution. देखिए इधर the question of seeking publicity नहीं allegation है. ये नहीं है. ये तो allegation वही है ना, substance पे जा रहे हैं straight away. It's not अच्छा making a speech and on the content of the speech actually. That ISI is fully involved in manipulation of judicial proceedings, including marking of cases to honorable benches. 2. That ISI personnel approached Chief Justice Islamabad High Court and asked him not to let Mr. Nawaz Sharif and his daughter come out of prison before general elections 2018 and not to include your lordship in the bench. And that Chief Justice Islamabad High Court responded that the bench will be constituted as per their desire. That your lordship claimed to even have knowledge of the person who conveys messages to the Supreme Court, that daily proceedings of accountability court were being reported somewhere, and that your lordship also knows the reason why the administrative control of Islamabad High Court as per statute was removed so that no judge could look into the proceedings, that your lordship was asked to give assurance that your lordship would give decision as per their request, and then references pending against your lordship would be closed. That if your lordship decided cases according to their desire, your lordship would be made Chief Justice Islamabad High Court by September 2018. Upon presentation of the transcript of your speech, Honorable Chief Justice of Pakistan had been pleased to observe that the allegations leveled in the speech had cast aspersion and maligned the superior judiciary of the country and berated its independence. It also implies some other national institutions. And the Honorable Chief Justice of Islamabad High Court was asked to comment upon the veracity of the allegations leveled against him. He was also asked to obtain from your lordship the material evidence available, if any, to
be immediately transmitted to the Office of the Chief Justice of Pakistan for consideration and appropriate action if necessary. In response, Honorable Chief Justice Islamabad High Court offered his comments by letter dated 29/7/2018, wherein his Lordship responded that while a letter dated 24/7/2018 received from your Lordship regarding allegations leveled against Honorable Chief Justice of Islamabad, his Lordship has categorically denied all the allegations. The above act on your part amounts to misconduct as envisaged the provisions inter alia of Article 2, 3, 5 and 9 of the Code of Conduct prescribed by the Supreme Judicial Council. One fact I want to bring to the notice, sir. At the time when these proceedings were initiated, proceedings were going on against Justice Anwar Kansi, Chief Justice of Islamabad High Court, before the Supreme Judicial Council for quite some time. I remember in another case when he sat on the Supreme Judicial Council and I objected. That was a case where I was counsel for Justice Farooq Irfan. I objected to his sitting on the Supreme Judicial Council on the ground that under Clause 3 of Article 209, a judge against whom proceedings under Supreme Judicial Council were being was it the same matter or some other matter? That was a question. They did not. Sabiq Judge Islamabad High